Good morning students. We are solving the questions from exercise 11.4 mensuration. Today we will solve question number 2nd and after that we will solve other questions of this exercise. So students, this is question number 2nd of exercise 11.4 and this question is diameter of cylinder is 7 centimeter and height is 14 centimeter. Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? Student, there are two cylinders. First cylinder is cylinder A and this one cylinder B. Diameter of this cylinder, first cylinder A is 7 centimeter and height is 14 centimeter. And diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Clear students? Now you have to guess whose volume is greater. Without doing any calculation, you have to find whose volume will be greater. स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है बिना कोई कैलकुलेशन किए कि इन दोनों सिलेंडर में किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा. आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द एक्चुअल वॉल्यूम डूइंग कैलकुलेशंस. फिर कैलकुलेशन से आप उस एक्चुअल वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि आपका जो गेस था, जो आपने गेस किया हुआ था, तो वो कितना करेक्ट है. आफ्टर दैट यू हैव टू कंपेयर, check whether the cylinder with greater volume also has a greater surface area. जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है, क्या उसकी सरफेस एरिया भी ज़्यादा है स्टूडेंट्स? इसको आपको फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जर्विंग दीज टू फिगर्स, वी हैव टू फाइंड हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर. सो स्टूडेंट्स, इन दीज टू फिगर्स the diameters and heights are interchanged. इनकी डायमीटर और हाइट एक दूसरे की इंटरचेंज, एक दूसरे से बदल गई है. जैसे इसमें डायमीटर 7 है और हाइट 14 है. बी वाले सिलेंडर में डायमीटर 14 है और हाइट 7 है. सो स्टूडेंट, जब हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो इसका रेडियस 7 हो जाएगा और इसका रेडियस 7/2 हो जाएगा. तो जब ऐसे कोई भी फिगर रहते हैं जिसमें हाइट और उनकी जो डायमीटर्स होती हैं अगर वो इक्वल है, तो जिसकी रेडियस उसमें ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा. क्लियर? तो हमने बी फिगर को लिया कि फिगर बी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी रेडियस अधिक है. अकॉर्डिंग टू इट्स रेडियस, द रेडियस ऑफ फिगर बी इज ग्रेटर, देन इट्स वॉल्यूम विल बी ग्रेटर. वॉल्यूम का हमें फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्टूडेंट्स. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. सो वॉल्यूम विल डिपेंड ऑन दिस रेडियस क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है स्टूडेंट्स. हाइट ज़्यादा इससे डिफर नहीं करेगा हाइट से स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा. अगर 7 का स्क्वायर होगा तो ये 49 टाइम्स हो जाएगा. 49, 7 × 7 49, और इसका 7/2 है तो इसका बहुत कम हो उससे. तो वॉल्यूम जिसकी अगर फिगर्स की जो हाइट और उसका डायमीटर है इंटरचेंज है, तो उसमें जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उस फिगर की, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द रेडियस. तो ये रेडियस पर डिपेंड करता है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दीज टू फिगर्स. सो स्टूडेंट्स, टू फाइंड आउट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दीज टू फिगर्स, फर्स्ट वी विल राइट द डायमीटर ऑफ दिस वन सॉल्यूशन. डायमीटर ऑफ cylinder A that is
7 centimeter. Radius of cylinder A will be 7 by 2 centimeter. स्टूडेंट रेडियस ये डायमीटर का हाफ होता है. दिस वन टोटल इज डायमीटर एंड दिस वन रेडियस ऑफ सर्किल. दिस वन सर्किल and this total part passing through the center of the circle, that is diameter, and this one only OA, it is radius, this one R. Clear students? तो ये रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया फिगर 1. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर A is equal to pi r square h. That will be pi 22 by 7 into r square. Radius is 7 by 2. So 7 by 2 square, it means 7 by 2 into 7 by 2 into h, height, that is 14 centimeter. Students, height we have not written here. So height of cylinder A, that is 14 centimeter. So it will be 14. Now this one 7 2 ja 14, 2 cancel, and this one 2 11 ja 22. Now it will be 11 into 7 into 7, that is 49. So 11 9 ja 99, 11 4 ja 44, and 9, that is 53. 539 सेमी क्यूब. स्टूडेंट्स, वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यह क्यूबिक मीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा. यहाँ क्यूब हम इसलिए लिखे हैं, टू द पावर 3. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज 539 semi cube. Now we will find the volume of cylinder B. So height of cylinder B, height of cylinder B, that is 7 centimeter, and diameter is equal to 14 centimeter. Now radius of cylinder B, that is 14 by 2, 7 centimeter. Clear students? So height is 7 centimeter and this one radius of cylinder B is 7 centimeter. Volume of cylinder B, volume of cylinder B, it will be pi r square h. Clear student? Now it will be pi 22 by 7 and radius of cylinder B, that is 7 centimeter. So 7 into 7, so value of pi, that is 22 by 7, radius of cylinder B, that is 7 centimeter, 7 into 7 because r square here, into h, that is also 7. Clear sure? So this 7 cancelled by this. So this one 22 into 7 7 ja 49. Clear sure? So 49 into 22, multiply it, that will be 9 2 ja 18, 2 4 ja 8 1, 9, again this one 9 8. So 8
9, 8, 17, 7, 9, 1, 10. This one 1078, 1078 semi-cube. So volume of this second cylinder, cylinder B, is 1078 centimeter cube, but volume of the first cylinder, that is cylinder A, that is 539 centimeter cube. So students, after calculation we find that the volume of cylinder B is greater than that of cylinder A. तो स्टूडेंट्स हमने इसमें देखा कैलकुलेशन से कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम अधिक है। ये वॉल्यूम इसका इतना डिफर क्यों कर रहा है स्टूडेंट्स? बिकॉज ड्यू टू द रेडियस। जो रेडियस इसमें है इसका r स्क्वायर हो रहा है स्टूडेंट्स। दोनों में अगर हम देखें तो ये 7/2 है इसका रेडियस, और सेकंड सिलेंडर जो सिलेंडर बी है उसका रेडियस 7 है। क्लियर? तो जिसका रेडियस अगर हाइट्स और जो डायमीटर और हाइट अगर इंटरचेंज है, सेम है, तो उसमें जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो जो हमने गेस किया, फर्स्ट हमने गेस किया कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो वहाँ भी हमने इस पॉइंट को ध्यान में रखा स्टूडेंट कि रेडियस जिसका अधिक होगा जिस सिलेंडर का, उसका वॉल्यूम अधिक होगा। इट इज़ मोस्टली डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। क्लियर स्टूडेंट्स? Now we have to find out, check whether the cylinder with greater volume also has a greater surface area. जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसकी सरफेस एरिया भी ज़्यादा है? So students, we will check this. Now we have to find out the surface area of both the cylinders. Clear students? So students, these cylinders are this one is the closed part and this one is open. Clear? And in this cylinder it is given that this part is closed and this one is open. Clear students? So we need not to find out the total surface area. We find out the surface area of curved surface area, that is lateral surface area. After that we have to find the area of the bottom in both cylinders. So students, first radius of cylinder A, that is 7/2 सेंटीमीटर। फर्स्ट कैलकुलेशन में हमने इसको लिया था स्टूडेंट्स। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर A, this one cylinder A, that is 14 centimeter students, 14 centimeter. And cylinder B, radius of cylinder B, that is 7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इस डायमीटर को हमने हाफ कर लिया, दैट वन 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी, दैट इज आल्सो 7 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, surface area of cylinder A, that will be, students, area, this one lateral surface area of this cylinder plus area of the bottom. Lateral surface area, that is 2 pi r h plus this one pi r square, because there is only one circular part. So we have to find out the area of this circular part or area of the circle, that is pi r square. So students, take pi and r common, pi r, this one is common students, because pi r square here and pi r here. So pi r is common, this one 2 into h plus here r. Clear student?
So it will be 22 by 7 into radius, that is 7 by 2, and into 2 into height, that is 14, plus radius, that is 7 by 2. And it will be this one 7 cancel by 7, 2 11 ja, so here 11 into this one 14 2 ja 28 plus 7 by 2. So take LCM in this two, that will be or divide it 7 by 2. You can adopt both method. Clear स्टूडेंट्स? या हम 7 को 2 से डिवाइड करके प्लस कर लें, या इसको LCM लेके फिर प्लस करके ऐसा करें. तो स्टूडेंट्स दिस वन 11 into 28 plus 3.5, 7 by 2 it means 3.5. So 28 plus 3.5. Clear students? So it will be 11 into this one 31.5. 31.5. So 11 5 ja 55, 11 1 ja 11, and 5, that is 16, and 11 3 ja 33, and 1, that is 34. So it will be 346.5 semi square. Clear students? Now this 11 5 ja 55, 5, 11 1 ja 11, and 5, that is 16, 6, 11 3 ja 33, and 1, that is 34. 346.5 centimeter square. Now we will find the surface area of cylinder B. Surface area of cylinder B. Clear student? This one, that will be also curved surface area plus area of the bottom, and it will be curved surface area 2 pi r h plus pi r square. Clear student? Take common, that will be pi r. Now that 2 into h, this one is left here, plus in this r is left. It will be 22 by 7 into radius of this cylinder. Cylinder B is 7 centimeter students. So 7 into this one 2 into 7, because height of this cylinder is 7 centimeter, plus radius is also 7, and this one cancel. 22 into 7 2 ja 14 plus 7, and it will be 22 into 21. So multiply this student, 22 into 21, so 1 and 2, that will be 44. So this one 2, 4 2, 6, and this one 4, and it will be 400. After multiplying we find that it will be 462 semi square. So surface area of cylinder B is 462 centimeter square, and surface area of cylinder A is 346.5 centimeter square. So after calculation we find that surface area of cylinder B is also greater. Clear student? In this question check whether the cylinder with greater volume also has a greater surface area. Yes, the cylinder with greater volume has greater surface area. We find after calculation that the surface area of cylinder B is greater than surface area of the cylinder A.
This is question number 3, and in this question find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. Volume and area of the base is given here. So students, this one is a cuboid. So base is this part is base. क्लियर स्टूडेंट, इसका बेस ये है, इसकी एरिया दी गई है, इट इज गिवन. दिस वन width and this one length into width, that is the area of the rectangle. So base of the cuboid is rectangular, therefore this one will be L into B. So solution: base area, that is 180 centimeter square, or L into B is equal to 180 centimeter square. This one first part of the question, it is given, students. Clear? Base, that is L into B, is given, and volume of cuboid, that is 900 semi-cube. It is also given, students. So volume of cuboid, that is L into B into H, length into width into height, that is volume of cuboid, and it is 900 centimeter cube. So from the first equation, this one, we have to put the value of length into width in this. So it will be 180 into height is equal to 900. Clear, students? So height is equal to 900 divided by 180. This one cancel, 0 and 0. 90 by 18. So it will be 18 5s are 90. Clear, students? So this will be 5 centimeter. Height of this cuboid will be 5 centimeter. This is question number 4, students. And in this question, a cuboid is of dimensions 60 centimeter, 54 centimeter and 30 centimeter. How many small cubes with the side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? So students, in this question, a cuboid is given. So this one is the length, and this one width, and this one height. स्टूडेंट, इस तरह से अगर डायमेंशन दिया हुआ है तो हम उसको सीक्वेंस में ही ऐसे लेंथ, विड्थ और हाइट उसकी ले लेते हैं. सो दिस वन सॉल्यूशन L, that is 60 centimeter, length of cuboid, this one cuboid. Clear, students? Length 60 centimeter, width 54 centimeter, height that is 30 centimeter, and cube, side of cube, that is A, that is 6 centimeter. Student, first of all, this one is figure. This one is cuboid. Clear, student? Length, width and height of this cuboid is given, and suppose this one is a cube.
स्टूडेंट क्यूब में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सो दिस वन 6 centimeter. In this dimension is given here. So this one is small cube and this is cuboid. स्टूडेंट्स इस तरह का अगर क्यूबाइडल कार्टून कोई है तो उसमें इस तरह के कितने क्यूब्स प्लेस किए जा सकते हैं, कितने क्यूब्स रखे जा सकते हैं, वी हैव टू फाइंड दैट। क्लियर? सो नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी प्लेस, that will be volume of cuboid divided by volume of one cube, volume of one cube. Now it will be volume of cuboid, that is L into B into H, length into width into height, and this one side cube, A cube. Clear student? Volume of cube, that is A cube, because side is A here. And this one 60 into 54 into 30 and divided by 6 into 6 into 6, because this one 6 centimeter side and A cube, it means we have to write 6 3 times. So 6 5 ja 30, 6 9 ja 54, 6 10 ja 60. So it will be 10 into 9 into 5 students. So it will be 9 5 ja 45 and this one 10 into 45, that is 450 small cubes can be placed in this cuboid. This is question number 5, and in this question find the height of a cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter. Diameter is in centimeter students and volume is in meter cube. Clear? So first of all we have to change this diameter into meter, because it is given in centimeter and volume is in meter cube. Clear students? In this question we have to find out the height of the cylinder whose volume is given and diameter of the base is given. So solution is student, solution. First, volume, that is volume of cylinder is equal to 1.54 meter cube and diameter of base, that is 140 centimeter. Radius, it will be diameter by 2, that will be 70 centimeter or 70 by 100 meter, and it will be this one 7 0 0 cancel, 7 by 10 meter. Clear students? So we have changed this radius into meter because volume of this cylindrical cylinder is given, that is in meter cube. So volume of cylinder, that is 1.54 meter cube, and formula for the volume of cylinder, that is pi r square h. Clear students? It will be 1.54. So pi, the value of pi, that is 22 by 7, r square, radius 7 by 10, so 7 by 10 into 7 by
10 because it is r square, and height is, we have to find out height, students. So it will be 1.54. Now this one will be 7, cancel by 7, and this 22 into 7 into h upon 10 10 ja 100 is equal to 1.54. Now it will be h is equal to, स्टूडेंट्स इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड हो रहा है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम साइड चेंज करते हैं, दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड में इस नंबर को ले जाते हैं उधर, तो जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो इट विल बी 1.54 इंटू 100 upon this one 22 into 7. Clear friends? So it will be 22, first 1.54 into 100, that will be 154, and this one 7 2 ja 14, 7 2 ja 14, 1 15, it is also 154. So this one will be 1. So it will be 1 meter. Height of the cylinder will be 1 meter. This is the answer of question number